first step जो important है is portion control. And also second step है to really see how much of what you're eating. Like, are you eating a lot of sugar, carbs? A lot of people think that Indian khana is not good. When you think about diet, you want to do something that you can stick with for the rest of your life. नहीं तो weight ऊपर नीचे जाते रहेंगे. क्या कोई ऐसा आइडियल मील भी है जो हम सुनने वालों को बता सकें कि ये चीज़ जो है हम फॉलो कर सकते हैं अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, या वो अलग बात है कि मेडिकल कंडीशन है वो नहीं, अगर आइडियल हमें बताना हो कि ये फॉलो किया जाए तो वेट लूज हो सकता है, ऐसा कोई मील प्लान आप शेयर कर सकती हैं? The only way you can get bulky and look manly, quote unquote, what they say is if you're taking a PED, a performance enhancement drug, or if you're eating too much. Okay. So when you are weightlifting, and agar aap lean tone look chahte hai, then आपके खाना भी कंट्रोल करना पड़ेगा. Okay. And then different style of lifting करना पड़ेगा. Honestly, lal cha is probably the best. Lal chai, you mean like black tea? Black tea. Okay, without any milk. Yes. Okay. And try to limit the sugar as well. Yes. And you can have stevia instead. हर पख नू मिलदी है आवाज हुंदा है रोशनी दा सपना, वेलकम टू द शो. Thank you so much for having me. सपना, आपका पेज ही बड़ा इंटरेस्टिंग है. जब मैं देख रही थी श्रेड विद सपना, और आज की सोसाइटी की बात करें ना, मेरे ख्याल में तो सबका एक ही गोल बन गया कि वेट कैसे कम करना है. लेकिन वेट कम करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि उसको सही तरीके से लूज़ किया जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत लोगों ने वेट लूज़ किया, उनके फेस पे वो चीज़ नज़र आने लगती है. सो आप फिटनेस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? So for me, fitness हमारी lifestyle है. I've been doing it since I was 18 years old. And I treat it as a lifestyle. I do it every day. And it's not only good for my physical well-being, but for my mental health as well. And that's why I've stuck with it for so long. I know a lot of people think that fitness is just losing weight, but it's actually to bring mental clarity into your life and balance. जी जी जी. अच्छा, जब औरतों की बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो शो है वो खास तौर पे फीमेल फिटनेस पे पूरा आधारित है. सो फीमेल फिटनेस और मेन फिटनेस, क्या ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, और क्या ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से? No, same hai. It's same because, you're still eating healthy, gym ja rahe ho, it's same. But the training for a male and a female is a little bit different. It depends on your goals. But still, both requires discipline. It both requires gym jana and eating healthy. So there's really no difference. Aside from men train a little bit differently. They're obviously stronger than us. But that doesn't mean that we're not strong. So as far as weightlifting goes, we should be weightlifting as well. It's very important for women. बॉडी फैट की अगर हम बात करते हैं, बॉडी फैट की क्या कोई मतलब क्या इम्पोर्टेंस है? अगर आप एज अ फिटनेस ट्रेनर कैसे देखते हैं बॉडी फैट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? It's important because that's how our organs run. So, we need body fat, but not overly. We don't need body fat, right? So when we train, I know a lot of women, they want to completely shred down and just be muscle. But being a woman, we do need to have some fat in our bodies. But it's just to lower the body fat percentage. Because as we have more body fat, we're more susceptible to diseases and illnesses. So it's really good to keep it under control. सपना, डाइटिंग की थोड़ी सी बात करते हैं. अच्छा, ठीक. डाइटिंग जो वर्ड है ना, ये बड़ा कॉमन हो गया. आज आप किसी को भी पूछ लो ना कि आप क्या कर रहे हो, कहेंगे डाइटिंग कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें वेट लूज करना है, क्योंकि यही सबका मोटिव बन गया कि वेट लूज करना है. अब अगर डाइटिंग, हमारे बहुत से लिसनर सुन रहे हैं, वो सुने कि ठीक है आज सपना हमें टिप्स बता रही हैं, हमें भी डाइटिंग शुरू करनी है. किस तरीके से, सही तरीका क्या है शुरुआत करने का? अगर मैं आज सोचती हूँ कि मुझे डाइटिंग आज से शुरू करनी है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और कैसे वो जर्नी जो है वो बिगिन करनी चाहिए? So I think first step जो important है is portion control. And also second step है to really see how much of what you're eating. Like, are you eating a lot of sugar, carbs?
a lot of people think that Indian khana is not good. Okay. Healthy nahi hai. Yes. And Indian khana chhodne padega. But that's not true because Indian food kharab nahi hai. We cook with a lot of spices, masala, curry powder, hardi, and that's not bad for you. But problem kya hote hai is portions. You know, 4 rotis are Yes. not good, right? So maybe 1 roti instead. And then, you know, the type of meat that you make as well. I know Indian community, we have, I know for me, I'm Fijian, so we eat lamb and we eat goat. And it's really up to how you're cooking it. Aap kaise कैसा bana- घी डाल रहे हो उसमें? Exactly. And how much you're eating. जी जी जी. Right? And then also chicken is really good. A lot of Indians, they don't eat a lot of meat as well, and protein intake is really important. So for someone starting off dieting, I would say look towards eating more vegetables. Okay. More meat, keeping it high protein, and lower carb. Yes. So meaning, you know, rice and rotis, try to limit it. But I think the first step is not to cut out Indian food. Okay. Because if you start cutting Indian food out and you're used to eating Indian food, to acha nahi lagta, because food can be bland without spices. And I know our community is big on flavor. So it's really more about being aware of what you're putting in the food. Like you said, ghee, Yes. you know, keeping that to a minimum. And also eating more meat and vegetables. सपना, जैसे आपने इंडियन डाइट की बात की है ना, हमारे बहुत सारे सुनने वाले हैं जो वो इंडियन डाइट ही खाते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर कुछ और खाना भी शुरू कर दें उतनी देर तक सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब तक वो रोटी दाल सब्जी ना खा लें. कई बार क्या होता है, मैंने बहुत से केसेस में ये नोटिस किया है, आपने, क्योंकि आप तो उस जर्नी में हैं, आपने उस फील्ड में हैं, आपने देखा होगा कि हम कई बार दूसरों की देखा देखी डाइटिंग करनी शुरू कर देते हैं. हम अपना जो स्टेपल फूड है उसको छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं आज से हम ये खाना खाएंगे, हम सैलड्स खाएंगे, हम किनुआ खाएंगे. 2-3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता हम बड़े शौक से वो चीज़ें खाते हैं, लेकिन वो फिर धीरे धीरे हम बंद कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं, मेरे से नहीं हो रहा. आपने इंडियन फूड की बात की, क्या इंडियन फूड खाते हुए भी वेट कम किया जा सकता? Yes. Weight loss, you can still do that, weight loss. But like I said, I think people bada mistake banate हैं जब Indian खाना पूरा छोड़ देते हैं. Yes. क्योंकि it's not gonna be good for the long term. When you think about diet, you want to do something that you can stick with for the rest of your life. नहीं तो weight ऊपर नीचे जाते Yes, रहेंगे, yes. right? So you have to do something you can stick with, and incorporate foods you like. Dal is not bad. It's Okay. lentils. It's very high in protein. Quinoa, instead of eating rice, you can have quinoa. That's higher in protein as well. And we eat a lot of vegetarian curries and sabji and yes. things. Those are actually good for you. They're very high in nutrients. So, har Indian food, you don't have to stop. Right? कार्ब्स जो होते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं कार्ब्स. क्या वो सही है? नहीं. ओके. मेरे opinion, no. Because agar aap carbs stop completely, then one day when you do have carbs, it's your weight is going to shoot back up again. okay, Right? okay. You want to you want to always incorporate proteins, fats, and carbs in your diet. Carbs give you energy. So bina energy ke you cannot exercise, you cannot function. So that's why the keto diet is very big, and that is a low carb diet. Like you actually don't do any carbs. It's meat and veggies, and meat and fat. But it doesn't always work because people they don't have the same energy levels. क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है ना, जैसे आपने बोला कि कार्ब एकदम से बंद जब कर दी तो वेट तो कम होगा ही होगा, लेकिन जब 2 महीने बाद कार्ब्स फिर से खाना शुरू किया तो वो वेट वापस आ जाता है. तो हमें लगता है हमने इतनी मेहनत की, 2 महीने कार्ब्स भी छोड़े, रिजल्ट तो कोई मिला नहीं. तो इसके मतलब है yo-yo dieting, जो ऊपर नीचे, Yes. and you don't want to do that. Like I said, you want to do something you can stick with. जी जी जी. So carbs khao, but like kamti khao, right? ओके. And कार्ब्स खा cut it सकते हैं down. लेकिन थोड़े लेस अमाउंट Less amount and good carbs. जी. लो कार्ब डाइट की सपना हम बात कर रहे थे. लो कार्ब डाइट हम कह तो देते हैं, पर इसको आप कैसे समझाएंगी हमारे सुनने वालों को कि लो कार्ब डाइट क्या होती है? पहले तो ये बताएं, और अपने जैसे अपना इंडियन फूड है, आप लोगों का फूड है, उसमें हम किन चीज़ों को अवॉइड करें और कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं?
So a low carb diet का मतलब है कि it should be high protein and low carb. So ज़्यादा meats, lean meats, chicken, and for people that don't eat meat, like lentils, dal, वो सब. And then low carb meaning carbs not too much. So if you're eating 1 cup of rice a day, measure it to half a cup. Okay. So you want to cut down. And I think the biggest thing is to measure your food. Khana measure kar to lose weight. Okay. So if you like roti, then if you're eating 3 rotis a day and you're trying to lose weight, cut down to 1 roti and see how you like it. But you want to maintain like low carbs and make sure you're having a lot of protein. I think that's where people kind of make a mistake. They don't eat enough protein, and that's what builds your muscle and that's what burns the fat. सपना मुझे पता है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है और हर इंसान का जब आप लोग भी मील प्लान उनको देते हैं तो डिफरेंट होता है उनकी बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से, उनकी क्या कंडीशन है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है. क्या कोई ऐसा आइडियल मील भी है जो हम सुनने वालों को बता सकें कि ये चीज़ जो है हम फॉलो कर सकते हैं अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, या वो अलग बात है कि मेडिकल कंडीशन है वो नहीं, अगर आइडियल हमें बताना हो कि ये फॉलो किया जाए तो वेट लूज हो सकता है, ऐसा कोई मील प्लान आप शेयर कर सकती हैं? So in general, agar aap weight loss ki, that's your goal, then eating at least 3 solid meals with a good balance of protein, carbs, and fat. And again, portion control depending on your body weight. So if you're a woman, based on your body, we would have to calculate how much protein, fat, and carbs you need in order to lose weight. So what's really good, a good rule of thumb is to make sure that you're incorporating each of those like protein, carbs, and fats in each meal. Right? So for instance, for Indian food, if you're a vegetarian, which I know a lot of Indians are, you know, you can have 1 cup of dal, half a cup of rice, and have some vegetables. That's a good high protein meal. And then also if you eat meat, then, you know, you can have some chicken curry, maybe like 4 ounces of chicken curry, half a cup of rice, and vegetables. It's really important to eat a lot of vegetables because it gives you the nutrients, right? फैट कितना लेना चाहिए, फैट की क्या अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो खाना बनता है वो तो घी, तेल, इन चीज़ों में बनता है. So वो थोड़ा कमती करना है because वो जस्ती नहीं is not good. But try to limit it or up. You can use coconut oil. You don't always have to use ghee. You can use a healthier alternative. I use avocado oil when I'm cooking. And then of course measure it out, maybe like 2 tablespoons. कम डाला जाए. हाँ, कम. Not, you know, 1-2 cups. That's too much. So, but body ke musibat mein, right? Like everybody's body requires a different amount of fat. Yeah. तो आप कहते हो कि कोकोनट ऑयल या एवोकेडो ऑयल ये जो हैं ये बेस्ट हैं कुकिंग के लिए, अगर हमें घर में कुकिंग कर रहे हैं तो, इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत सारा घी या तेल उसमें डाल देते हैं. Yeah, and ghee necessarily is not bad, but you want to limit it. Yeah, not a cup. सब ना चीट मील्स की बात करेंगे. बड़ा मुझे लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि कई बार हम क्या करते हैं, 5 दिन हम क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं कि हमें तो यही खाना है, हमें तो कार्ब्स भी नहीं खाने, हम तो फैट भी नहीं लेंगे. लेकिन जो 2 दिन है जब चीट मील्स की बात आती है तो सुबह हमारे ब्रेकफास्ट में होते हैं चना भटूरा, दोपहर में आ जाते हैं पकौड़े और शाम में देन कुछ फ्राइड. इज़ दैट राइट? So cheat meal is okay, but cheat day nahi karna chahiye. So you can't have, you know, the whole day just have chana bhatura and stuff like that. But what I recommend, agar aap start kar rahe hain and you're beginning your fitness journey, to try and not have cheat meals in the beginning because it can throw off your progress. Because kabhi if you're eating really healthy for, you know, 5-6 days, one day you just feel like eating everything. And then your 5-6 days of hard work is down the drain. So then there's no use. एक चीट मील हो सकता है. एक meal, yeah. एक day नहीं. 1 day नहीं. 2 days तो बिल्कुल नहीं. No, absolutely not. So अगर 5 दिन मेहनत की है तो डिजर्व करता है इंसान की एक चीट मील जो है वो ले सकता है सैटरडे संडे को. Yeah. Then again उसी ट्रैक पे आना पड़ेगा. Yeah, just
to have a balanced जी lifestyle. जी सपना बहुत ना एक मिथ जो है जो मैंने बहुत सुनी है, आप भी शायद एज अ पर्सनल ट्रेनर इस बात से सहमत होंगे कि जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करती, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप ना मर्दों की तरह दिखने लग जाओगे या वेट ज़्यादा आ जाएगा, बॉडी फैट ज़्यादा आ जाएगी. वेट लिफ्टिंग और विमेन, क्या औरतों को वेट लिफ्टिंग करने से डरना चाहिए? नहीं, absolutely not. Weightlifting तो जरूरी है because weightlifting क्या करता है is it makes you strong and it also makes your body toned, right? So also it's good for your bones, which is very important for women as we age जी. because we are, susceptible to osteoporosis. So it is a big myth. The only way you can get bulky and look manly, quote unquote, what they say is if you're taking a PED, a performance enhancement drug, or if you're eating too much. Okay. So when you are weightlifting, and अगर आप lean tone look चाहते हैं, then आपके खाना भी control करना पड़ेगा, Okay. and then different style of lifting करना पड़ेगा. अच्छा, एक और चीज़ की बात सपना मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, बेली फैट इन विमेन, क्योंकि बड़ा मसला होता है ये ना कि कई बार कई औरतों का ये कहना होता है कि सिर्फ बेली फैट ही है हमारा, उसको स्ट्रेस बेली भी कह देते हैं, कहीं हार्मोनल बेली भी उसको बोल देते हैं. उसको कम करने का क्या तरीका है? So सबसे बड़ा टिप है डाइट अपनी कंट्रोल करो and stress levels control करो. And a good way to control stress is take magnesium as well as exercise to release the good hormones. Okay. But with women, we do bloat when we have increasing amounts of cortisol levels in our body, and that actually in turn, that's what happens. We bloat in our bellies. And to lose that, it's important to stay hydrated, get enough sleep. 8 hours at least, and then eat very healthy. and आपने exercise. मैग्नीशियम की बात की, उसका क्या रोल होता? So magnesium actually controls आपकी cortisol levels in the body. Okay. So अपना stress levels limit करता है, and then that way you reduce bloat in your belly. Okay, So it is okay. important. You can take it at nighttime. It also helps you sleep because sleep is very important होता है for losing belly fat. जी जी. Yeah. सपना थोड़ा हमें सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताएं कि जो विमेन हैं 40+ विमेन हैं उनको किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? So, I recommend a multivitamin. I don't really encourage too many supplements. I think that a lot of your nutrients that you get it through food. You don't really have to take anything else. But definitely multivitamin, like I said, magnesium is good to regulate your sleep patterns and stress levels. And then also protein, like I said, important parta hai. So try to take a protein powder as well to make sure you're eating enough protein. What about omega-3? Omega-3 is also good for your brain functioning. So that's also important. You can add that. तो वो भी रात के टाइम ले सकते हैं या उसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है लेने? I believe you can take the omega-3 in the morning. Okay. Yeah. That's also good. And that also helps with your muscle building. सपना चाय, कॉफ़ी और मिल्क, इनकी इनटेक कितनी मतलब कितने अमाउंट में चाय, कॉफ़ी अगर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं कितना अमाउंट होना चाहिए इनका? So sometimes कभी people are intolerant to dairy. Yes. So I don't really recommend having that much milk. But you can use you can use oat milk, coconut milk, or you can also use almond milk instead of whole milk. Okay. That will reduce bloating. And honestly, lal cha is probably the best. Lal chai, you mean like black tea? Black tea. Okay, without any milk. Yes. Okay. And try to limit the sugar as well. Yes. And you can have stevia instead. But it's not necessarily a bad thing. Okay. So शुगर जिनके स्वीट टूथ हैं उनके लिए कोई टिप है कि वो अपने स्वीट टूथ की क्रेविंग को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? Fruits खा सकते हैं. Okay. Fruits खा सकते हैं, yogurt. What happens is जब आप sugar छोड़ देते हैं, then you don't crave it as much. Okay. Right? सपना एक चीज़ हमें और बताएं कि बहुत अलग अलग बातें हमने सुनी हैं, अलग अलग फिटनेस ट्रेनर अलग अलग थ्योरीज बताते हैं. कोई कहता है कि स्नैकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए मील्स के बीच में, कोई कहता है कि हर 2 घंटे बाद खाना ज़रूरी है आपके बॉडी ग्लूकोज के लिए. आप क्या कहेंगी कि स्नैकिंग बुरी है, स्नैकिंग अच्छी है, कितनी स्नैकिंग करनी चाहिए? Depending
and snacks, right? क्या Kya खा रहे snacks? हैं? Yeah, like are you having Okay. chips? If you're having a protein bar, I mean that's okay. But my recommendation is still have less processed food. Okay. So I don't like to have protein bars because I try to have 3 or 4 whole meals, as in no bars and things like that, because it has hidden sugars. तो ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ये 3 मील हो गए. अगर उसके बीच में कुछ खाना है तो क्या क्या रिकमेंड करेंगे आप? I recommend yogurt, Greek yogurt's high in protein with some fruit. And then I also, smoothies are great, Okay. with protein powder and vegetables or fruits. That's also good. सपना आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत पॉपुलर हो रही है. उसके बारे में आपकी क्या राय है? So a lot of people ask me this question. And I do think it does work for a lot of people, but every body different It's hota hai, different. right? So it really depends on your body. I personally मैं intermittent fasting नहीं करती हूँ. Breakfast is really important because then I get grumpy. क्योंकि हमें शुरू से सिखाया गया है कि Yeah. ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, me myself, मैं breakfast खाती हूँ, मैं intermittent fasting नहीं करती हूँ, but some people it works for them. I eat 3 to 4 whole meals a day. सपना अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी व्हाट इज योर पूरे दिन का जो खाने का रूटीन है, व्हाट इज दैट? Both boring होते हैं because I eat the same thing every day. Okay. So for breakfast I usually have oatmeal and then anda, right? And then लाइक बॉइल्ड एग. boiled egg नहीं, मैं egg whites खाती हूँ. ओके. सो उसको आप ऑमलेट की तरह कुक कर लेते हैं? मैं scramble करती हूँ. स्क्रैम्बल. Yeah. जी. एंड विद मिल्क और समथिंग, टी और कॉफी? नो. मैं coffee पीती हूँ but black. Okay, black, ठीक है, yeah. okay. No chini. And then my next meals are very similar. मैं protein khati hu, so like chicken, but I bake my chicken with spices. So I put like curry powder, masala in there, and I bake it. I don't make it like curry. For your lunch? For my lunch. So पर I'll have उसके the बीच chicken. में आप कुछ नहीं खाते मैं कुछ ब्रेकफास्ट नहीं, और लंच? मैं कुछ नहीं खाती because after my breakfast मैं workout करती हूँ and then I come back and then I have my lunch. ओके, ठीक. And so I'll have like a curry style chicken with some rice. I measure everything and I have vegetables. Or you eat rice? I do, Okay. but kamti, like not a lot. And I'll have that with vegetables. And my next 2 meals are usually like protein and veggies, and everything is measured out. सपना फिटनेस टिप्स हमें जाते जाते ज़रूर बता के जाइए, क्योंकि आपकी बातें बहुत सारे लोगों ने ध्यान से आई थिंक सुनी होंगी, और जो भी वेट घटाना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं? So first tip, to stay consistent. Don't quit. That's my first tip. Okay. Every day, have a good routine. Make sure exercise, like you're doing an exercise, even if it's just walking. At least 30 minutes of activity a day. And then, again, portion control your diet. Eat healthy, and if you need direction, then hire a coach or a trainer who can make you a meal plan. For me, I do create meal plans for my clients, and because I work with a lot of the Indian community, my meal plans, I put Indian food in there, so it's easier for people to adjust. But every day you have to stay consistent. Don't do it for 3 days and then quit on day 4. आई थिंक सपना ये आपकी बहुत ना एक अच्छी मैं खासियत कहूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम किसी से मील प्लान बनवाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो इसके बारे में हम फेमिलियर नहीं होते, या हमें लगता है कि अब ये कैसे बनाएं, क्योंकि अगर हम विमेन की बात करते हैं, उन्होंने पूरे घर का खाना बनाना है, अपने लिए वो अलग से खाना नहीं बनाएंगी. तो आपके मील प्लान्स की ये गुड थिंग है कि आप वही चीज़ें डालते हैं जो घर में बनती हैं, और लोग वही चीज़ें खा के भी वेट कम कर सकते हैं. Yeah, and I first talk to the client. So my first आपको questions पूछते हैं, what do you like to eat? क्या चीज़ can you not live without? And then I make your plan, because मैं चाहती हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी भर you stick with your diet and not yo-yo dieting. So my tip would be, yes, quit नहीं करना, stay hydrated, get 30 minutes of exercise every day, and then of course eat healthy.
सपना एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे। कई बार होता है कि अब लेडीज की हम बात कर रहे हैं ना, जिम जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ी वो होती है कि जिम जाने का टाइम नहीं है। क्या घर में रहते हुए भी एक्सरसाइज किया जा सकता है? Yes, you can. आप घर से भी exercise कर सकते हैं. I do make home meal workout plans too Okay. that you can work out at home. You would need to get a little bit of equipment, some dumbbells, but you can still lose weight working out at home. Wow. Yeah. Anything in closing, Sapna? Any Sapna special tip? I think that if you have a goal to lose weight, the most important thing, like I said, is to be consistent. That's the key to success. And don't give up, because if you give up, you'll never know if you don't try, right? So I think every day just make sure that you're doing it not just to look good in your clothes, but to feel healthier inside. Okay. Thank you so much, Sapna, आपके आने के लिए, आपकी टिप्स के लिए. Thank you so much for having me.